I'm your host Slim bin Mohammed Rafi, and here is your YouTube channel Zamir Universal. Today I'm going to tell you how the IDF or the Israeli Defense Forces soldiers have behaved, young men and women, and how they have been brainwashed as children in the last 75 years. You can see that at least there are 5 generations who are now of the age between 18 and 21 to serve in the army, and how they have been told that there are no humans in Israel. This land belongs to them, which is nonsense. It doesn't. And they came as refugees, barefooted, starved, naked, up to their navel, and they had no shoes. Hitler had just spared few of them, and the rest he had burned them in the incinerators and he had put them in the gas chambers. Why did he leave them? You will see from some of these things that how they exploit from 3 years old to 9 years old and 12 years old. Listen to from the mouth of the rabbi himself, and then you can understand yourself how these Zionists, collected the scum of the society from all around the world, have been gathered in a small piece of most sacred land of the prophets, Prophet Abraham and his children. How dirty, how filthy this small group of Jews are, which are called themselves as Zionists. Listen from the the mouth of the own Jews, who not only resent it, they spit on them, and see now how the uprising in Israel or in this Zionist or illegitimate state created 75 years ago by Harry Truman, which is burning and turning in his grave and being split in the deepest pits of fire, along with his Netanyahu and Kermich and Ben Gaber. These are the three people, these three musketeers, these rascals, these dirtiest, the filthiest people who must be hanged from their neck till they breathe their last, or at least their necks are broken and their body falls on the road. Now, if you don't listen from the Jews, you will probably think that there is someone who is biased, and they created a narrative. First, the sympathy that they had survivors of the Holocaust. It's nonsense. It has been challenged by historians that there was no such thing as Holocaust. There was even not even fraction of the millionth fraction of the cruelty they have let loose on the Gazas. And you can see even last night they bombed the tents where the people were, as they have, because they have left no houses for 2.9 million Gazan people. And you see this disproportionate, and the extent of cruelty you would have never seen in any war in the world. Neither the Romans nor the Vikings, nor I think you would have seen in the Ottoman. You wouldn't have seen such a thing even in Genghis Khan, in Pharaoh, in Namrud. That the cruelest people in earth, and they now Netanyahu's now with hiding in like a rat in the hole, and everybody prayed that he will die dog's death with secondaries in his bones from the prostate cancer, but the evil dies hard. So you can see for yourself what the Jewish woman saying that you want us to think you are right. See their own people in Israel protesting and showing them the deeds they have done, how they have taken the night clothes of the Palestinian woman, the sacred, and how they have taken their homes, their livestock, their olives, their groves, their grapes, and their land, and how like animals. You don't even treat a sheep or a dog like this as they have treated, because they have been taught, they're brainwashed as a child. So unless you completely eliminate these 7 generations of 75 years, the kids of these scums, you will never ever see the exact Jew. And if you want to see the Jew, I'm showing you the 2 or 3 Jews here, but I also am showing you the dirtiest and the filthiest face of the one who wants to justify that even 3 years or 12 years, it's okay to sodomize them, to rape them, and to tear their vaginas and tear their body parts apart. And you can see then at that stage of their, now you can understand the island where you found Clinton, where you found
Adult woman over 12 or 12 and a half, bein pnuya, whether she is available, bein eshes ish or not, even if he was 9 years old, as we learned earlier again and again. That's the beginning when intimacy has an effect with a man, then the courts could possibly take her to court and try to apply capital punishment if there are witnesses, etc., who warned them, because the Jew ran into a problem due to this encounter. This is specified in the Torah, as it says with the Midianites, that these girls were sent out by the Midianite leaders to entrap the Jewish young men, as it says in the biblical story of Bilam. Say, what? You want us to make you look good? That's not my job. Your job is to make us look good. Our job is not to make you look good, American Jews. What do you have to worry about? Your job is to make us look good. And here's how you do it. Every one of us has to serve 3 years in the army, 2 years in the army, some of us 5 years, and then for the rest of our lives, you have got to serve 2 or 3 years in the army of words. You've got to learn to fight the political battle, which is even more important at this point than the military battle that we are. We'll fight the military battle. We're not asking you necessarily to come and be lone soldiers, although some of you can. You've got to learn how to fight back on the campuses, how to make the arguments. Now, they keep shifting. You know, the ground keeps shifting under us. They keep changing the language. Intersectionality wasn't even a word 10 years ago. Now suddenly it's intersectionality. You've got to stay on top of it. And you know how we train for the army? We don't train for defensive warfare. If the war against Israel ever had to be fought on Israeli soil, do I have to tell you? It's an impossibility. So it's the same thing. Don't let the war of words ever be fought about Israel's nature. Let it be fought about why you can't accept Israel, why you have to single out this tiny people. Try to find Israel on the map. It's hardly there. You know, we used to play this game, Where's Waldo? Where is Waldo on the map? Are you going to really tell me that this is the country you want to blame? Push them, teach them how to defend by attacking. Teach them really what one says as in fencing. You've got to do that. You've got to make demands on them. They've got to serve for 3 years in the army of words. The Israeli response has violated every item in international humanitarian law. So as a Jew, I feel deeply ashamed and angry about what Israel is doing. And I'm appalled that they speak as Jews, particularly the religious nationalists, the religious Zionists within the government, like Bezalel, Smotrich, and Itamar Ben-Gvir. They see themselves as Jews and they speak in the name of Jews, but they have nothing in common with me. And I'm not a practicing Jew, but I'm proud of my Jewish heritage, and I'm equally proud of my Arab heritage. And I know that the 4 core values of Judaism are altruism, truth, justice, and peace. And the Israeli government today is the antithesis of these core values.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस वक्त मुसाद को डायरेक्ट किया गया है कि इस शख्स को नहीं छोड़ना, इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। इस शख्स का नाम है दयाब अबू जहजा। ये है कौन शख्स? असल में ये हिजबुल्लाह के साथ काम कर चुका है, ट्रेनिंग ले चुका है, और इसने इस वक्त हिंद रजब फाउंडेशन बनाई है बेल्जियम के अंदर। ये कर क्या रहा है? ये जो काम ये बंदा कर रहा है, आप सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त शायद ही कोई कर रहा हो। देखिए, मैदान के अंदर जंग लड़ना ये एक बहुत बड़ी बात होती है, कुर्बानी देना उससे बड़ी बात है, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो आप ऐसा कर देते हैं कि आप मुसाद को भी बीट कर देते हैं। अब ये इसको मारना चाहते हैं और ये इसकी जान नहीं छोड़ेंगे। और आपको पता है कि जो इस्माइल हानिया को दिन दहाड़े मार सकते हो, किसी को भी कर सकते हैं, इसके वो पीछे सीन क्या हुआ है? ये बंदा काम ये कर रहा है कि इजराइल के जितने फौजी हैं, देखिए मोस्टली जो इजराइल के फौजी हैं वो 18 से 25 साल के दरमियान है ज्यादातर। उसमें तो कुछ ऐसे भी होंगे जो 28 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, लेकिन ये जो मोस्टली यूथ इनकी फौज के हैं 18 से 25-28 साल के दरमियान, ये असल में ज्यादातर जो है वो नौजवान है। ये टिकटॉक की दुनिया में है, ये ज्यादातर फेसबुक की दुनिया में है, इंस्टाग्राम की दुनिया में है, यूट्यूब की दुनिया में है, ये सारे के सारे इस दुनिया में। और वो कर क्या रहे हैं? वो फौजी वो गजा में जाते हैं, आपने देखा होगा अक्सर, वो कभी किसी खातून का अंडरगारमेंट्स उठाकर पहन लेते हैं, यानी मॉक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। अब सीन क्या हो रहा है? ये शख्स उन सब की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा है। अब इतना इजराइल ने अपने फौजियों को समझाया कि आपने वीडियोस नहीं डालनी, आपने तस्वीर नहीं डालनी। जितने फौजी होते हैं ये उन सब को ट्रैक करता है। इसके पास इंटरनेशनल एजेंसियां भी इसकी मदद कर रही हैं, जो इवन के इजराइल के अंदर ही क्यों ना हो, अंदर से मदद आ रही है, बाहर से आ रही है। जो इजरायली जो फौज में है वो करते क्या है कि वो दुनिया भर में ट्रैवल कर रहे हैं। इजराइल में याद रखिएगा मोस्टली लोगों के पास डुअल नेशनैलिटी है, यानी दोहरी शरीयत। किसी के पास अमेरिका की, वो दुनिया भर में उनको वीज़ा की भी जरूरत नहीं होती, वीज़ा फ्री ज़्यादातर उनकी कंट्रीज होती हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादातर यूरोप से आए हैं, यूएस से आए हैं,
किसी के पास रशियन पासपोर्ट है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, तो उनके पास वीज़ा की और चीज़ों की कमी नहीं। वो साइप्रस जा रहे हैं, वो ब्राज़ील जा रहे हैं, वो दीगर जगहों पर जा रहे हैं। ये बंदा कर क्या रहा है, इसकी टीम ये सारे उनको मॉनिटर करते हैं और इनकी तस्वीर इन सब को मॉनिटर करके जापान से लेकर ब्राज़ील से लेकर दुनिया भर में जहां जहां हो सकता है वो बंदा आता है, जो भी लैंड करता है उस शख्स के खिलाफ फौरी तौर पर पिटीशन दायर करवाते हैं कि इसने गजा में मासूमों को मारा है, वॉर क्राइम्स किए हैं, इसने लोगों को मारा है, आम लोगों को तबाही की है, घरों को उजाड़ा है, और ये वियना कन्वेंशन और इंटरनेशनल लॉस के खिलाफ है। अब होता क्या है, इस बंदे की वजह से कई इजरायली फौजी इस वक्त जिन मुल्कों में गए हैं वहां पर उनको पकड़ लिया है, जेलों में है, यानी डाल दिया गया है और उन पर मुकदमे चल रहे हैं। रिसेंटली ब्राजील का बहुत बड़ा केस सामने आया, उनको मुल्क छोड़ने से पाबंद किया जाता है। अब इसराइली सारी जिंदगी उनकी आदत है गोरों की तरह कि वो साल में 2-3 दफ़ा वेकेशन पर ज़रूर जाते हैं, एक समर वेकेशन और एक विंटर वेकेशन। और आपको पता है कि अभी रिसेंटली क्रिसमस गुजरी, न्यू ईयर गुजरा और ये लोग छुट्टियां मना रहे हैं, और गजा से जो लोग आते हैं वहाँ जो हालत है वो ये लोग जाते हैं। अब सीन यहाँ पर ये हुआ है कि इसने मॉनिटर किया सबको, इसने वहाँ पर पिटीशन दायर करवा दी। अब कई ममालिक में इनके राब्ते हैं, ये इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है पूरे यूरोप में, यूएस से लेकर हर जगह पर वो पिटीशन दायर करते हैं, उनको पकड़ा जाता है। ब्राजील का केस रिसेंटली जो सामने है। अब इसराइल कर क्या रहा है, इसराइल अपनी आखिरी हद तक जा रहा है कि उनको छुड़वाने के लिए डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहा है, मुसीबत पड़ी हुई है, और अपने फौजियों को कहा है कि जी वापस आ जाए, अब जहां पर है फौरी तौर पर आए। और उनको कहा गया है कि तुम लोगों ने किसी सूरत फेसबुक पर, ट्विटर पर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, किसी जगह कोई वीडियो तस्वीर नहीं डालनी, आप लोगों ने पोस्ट ही नहीं करनी। सो अब सीन ये हुआ है कि इस शख्स के खिलाफ मोसाद को डायरेक्ट किया गया है, ये बंदा हमें इस दुनिया से रुखसत होता हुआ नजर आना चाहिए। अब एक बंदे ने वो काम किया है जो मोसाद भी ना कर सकी, यानी आप ये सोचें कि मोसाद की इंटेलिजेंस एजेंसी किसी को मॉनिटर कर रही है, वो जा रहे हैं उनकी एजेंसियों से राब्ते हैं, उनके मुखबिर हैं, वो कितना बड़ा नेटवर्क है, CIA साथ है, बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज के लोग खुफिया तौर पर इसराइल की मदद कर रहे हैं, वो सब हैं साथ। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर इनका जो मामला है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है और अलग है। ये बंदा अकेला काम कर रहा है, छोटी सी इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो काम वो कर रहा है वो इतने बड़े पैमाने का कर रहा है। अब इजरायली उन ममालिक को नोट डाउन कर रहे हैं कि जहां पर वो जाना चाहते हैं वो नहीं जा पा रहे, कि हम छुट्टियां गुजारने नहीं जा सकते, हम फलानी जगह नहीं जा रहे, हम टिमकानी जगह नहीं जा रहे। और इस सूरत हाल में अब इजराइल ने कहा है कि ये दहशतगर्द है, ये हिजबुल्लाह के साथ काम कर चुका है। इसने असल में 2003 में एडमिट किया था कि वो ट्रेनिंग ले चुका है, फिर उसने बताया कि उसके बाद के इसके भी इंटरव्यूज थे। तो अब वो कह रहे हैं कि ये तो हिजबुल्लाह का, इसको तो हमने छोड़ना नहीं है। वो इसको जवाब क्या बनाना चाह रहे हैं कि अगर हम मार देंगे तो हम ये कहेंगे दहशतगर्द है। वो अपने मीडिया पर इसको हाईलाइट कर रहे हैं, उसकी तस्वीर निकाल रहे हैं, उसका तमाम चट्टा कट्टा खोलकर सामने रख रहे हैं और इजरायली फौजियों को कह रहे हैं कि तुम लोग फिलहाल मुल्क छोड़कर ना जाओ, ये तबाही इस वक्त दरवाजे पर आई है और हम तुम्हें बचाते रह जाएंगे। देखिए इसराइल का इतना प्रेशर है दुनिया में, उनका पावर इतना ज़्यादा है, उनकी पावर इतनी ज़्यादा है कि दुनिया में कोई इनके खिलाफ काम नहीं कर सकता। लेकिन ब्राज़ील से लेकर कई ममालिक ऐसे हैं। अब मिसाल के तौर पर आप जाएं अमेरिकन पासपोर्ट के ऊपर मलेशिया में, आपके साथ होगा क्या, वो सारी दुनिया देखेगी। इसी तरह एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। आप जाएं किसी भी वजह से अपना पासपोर्ट लेकर किसी ऐसे मुल्क के अंदर जो आपके खिलाफ ऑलरेडी है, और इवन के अगर आप वहां पर कुछ भी नहीं होता, आपके खिलाफ पिटीशन दायर होती है क्योंकि आपने वियना कन्वेंशन के खिलाफ, इवन कि आप बेल्जियम में क्यों ना हो, तो ये आपको नहीं छोड़ते। अब ये बंदा वो काम कर रहा है और इसके रिसोर्सेज कम होने के बावजूद देखिए हुआ क्या है। ये गजा का इशू ऐसा है कि सारी इस्लामिक कंट्रीज एक पेज पर है कम से कम, और वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज और भी, इवन कि वो इस्लामिक ना हो, तो वो इसको सपोर्ट करती हैं, पैसा भी देते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन। आप इजरायली फौजियों को, उनके कमांडरों को गिरफ्तार करवा दें तो आप बताइए कि कोई पैसा देने के लिए क्यों नहीं तैयार होगा। ये बंदा काम कर रहा है और ये इसको नहीं छोड़ना चाहते। इजराइल ने इसको टारगेट बनाया हुआ है। अब इसकी जान को है शदीद खतरा और इसको पता है कि ये मेरे खिलाफ क्या करने वाले। इजराइल ने जब पता किया, मोसाद को कहा कि आप पता करके बताएं। ये बात ज़हन में रखिए, मोसाद के जो ऑपरेशंस होते हैं वो विद इन द कंट्री नहीं होते, वो आउटसाइड द कंट्री होते हैं। जैसे इस्माइल हानिया को मारना हो, जैसे
खास तौर पर हसन नसरुल्लाह को मारना और आयतुल्लाह के पीछे भी पड़े हुए हैं। तो जो भी ऑपरेशन होते हैं, जो लोकल ऑपरेशन होते हैं, जो बचाना अंदर खाते मुल्क को, वो शिन बैत काम करती है। वहाँ की एजेंसियाँ और बहुत सारी हैं, लेकिन मुसाद खास तौर पर इंटरनेशनल सतह पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसको टारगेट दिया गया है कि भाई इस बंदे को टपकाना है, इस बंदे को रास्ते से हटाएं, हमें ये बर्दाश्त नहीं है। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये बंदा इतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है जितना आप समझ लें कि इस्माइल हानिया है। यानी आप ये सोचें कि जितना वो अहम था, हसन नसरुल्लाह का नाम नहीं है क्योंकि बेशक इनका ताल्लुक है, उसका लेवल बहुत ही ऊंचा था, लेकिन इस्माइल हानिया की तर्ज का ये बंदा इजराइल के फौजियों को इस वक्त खा रहा है, दुनिया भर में उनको पकड़वा रहा है, उनके खिलाफ केसेस बनवा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे अहम डेवलपमेंट है, वो बड़ी हैरान कुन है कि आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि इजराइल के अंदर तकरीबन 15-16 लाख के करीब रशियन से, यानी जो इजरायली हैं वो रशिया से आए हुए हैं बड़ी तादाद के अंदर। तो वहाँ पर भी कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं, आपको पता है कि पुतिन ने ओपनली ये बात कही है कि इजराइल के फौजी और ये इजराइल के लोग जो हैं वो बदतरीन, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो उन्होंने को कत्लेआम किया, वो कह रहे हैं बदतरीन दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये दहशतगर्द लोग हैं। आपने कब लास्ट टाइम सुना है किसी के मुल्क से कि क्या उन कह रहे हैं गजा के अंदर, देखिए चाइना ने भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी थी जो पुतिन ने कहा था कि बदतरीन दहशतगर्दी इजराइल के फौजी करें, जो दहशतगर्दी करने वाला दहशतगर्द होता है। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि अगर वो जाते हैं अपने मुल्कों में भी तो फिर सूरत हाल क्या होगी। अब वो कर क्या रहे हैं, फ्लाइट्स बदल बदल के जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको खाली यहाँ से नहीं मिल रही कि आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं या फलाना करें। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो दूसरी एजेंसियों के थ्रू हो रही। देखिए बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज मिसाल के तौर पर आप ये ले लें, या बहुत सारी दुनिया में ऐसी भी कंट्रीज हैं जो इसराइल के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आ सकती, पर वो इसकी ऑर्गेनाइजेशन को इनको इंफॉर्मेशन दे देते हैं ये बंदा फलानी जगह मौजूद है इस वक्त, अब इसको जाकर ट्रैक कर लें, आप इसको अदालत में ले आए। फौरी तौर पर जाते हैं, उसका नाम जिस तरह ECL में नाम डलता है इसी तरह नो फ्लाई लिस्ट के अंदर नाम डलता है कि अब आप जा नहीं सकते। इन लोगों को पकड़ा जाता है। ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है उसका आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात क्या है। इस वक्त हालात ये बता रहे हैं, चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर मामलात काफ़ी हद तक इजराइल के ख़राब हैं और उनको ये बंदा चाहिए। देखिए अगर इन्होंने ये बंदा मार दिया या इसको रास्ते से हटा दिया तो इजराइल को अब ये सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे। देखिए इस्माइल हानिया को इन्होंने मारना था तो प्लान ये हुआ था या तो मॉस्को में मारेंगे या कतर में मारेंगे या तुर्की में मारेंगे या फिर लास्ट ऑप्शन थी तेहरान में। तो उन्होंने कहा अगर मॉस्को में मारा तो पुतिन ने तो हमें छोड़ना नहीं है, और कतर के अंदर मारा तो सारा अरब वर्ल्ड हमारे खिलाफ होगा, तुर्की में मारा तो अर्दोगान भड़केगा क्योंकि वो नेटो का है और वो हो सकता है दहशतगर्दी बिना पर नेटो हमारे खिलाफ चढ़ दौड़े। तो प्लान ये हुआ तेहरान, तो तेहरान के अंदर उन्होंने मारने का फैसला किया। तो दुनिया खिलाफ, इसीलिए उनको ये है कि बेल्जियम में मारे, पूरा यूरोप भी ना हमारे खिलाफ हो जाए। Killed because the names of so many hundreds of people, child molesters, even Trump visited there. So you can see the morality of these people, see the sexual perversion of the Jews advocates and provided. And believe you me, none of those children would be Jews, you know, they were supplying in those islands and these different rooms. And this is what this rabbi is saying, that it's okay to do all this thing with the non-Jews. So that shows you how dirt, how filth and why they should be eliminated. I'll make a commentary of how the IDF soldiers are being arrested. I'm sorry to say that it's in a different language, but I think the gist of thing I have told you in English, and I will try to sum up in English as well so that you can understand what's happening now. Is the world is becoming smaller and smaller for them. The arrest of the IDF soldiers started with Brazil, and up until now there are about more than a dozen countries where they have been arrested. There are people for their soldiers in Brazil, and I think the last one I have seen, and I have just heard that they were in France. And now when the European Union and the Western countries have started to arrest them, there will be no place for these rats to hide. And now every country, I think it is mandatory on that country, if they see a IDF soldiers to arrest, this is the only way for them to bend down and obey the international law, because you have to nip the evil in the bud. These are the ones who are going to grow and become the leaders and then replace Netanyahu
and your midst, and the Vancouver, those extremists who just want to take the whole land, and they have now destroyed the peace in Syria, Lebanon, now they even Yemen, even Iraq, and now they are sinking their horn in with Egypt and going back into the debt. And I'm afraid that when they have been surrounded like a wild, people, they have been, all the time they never wanted to live in peace with any of their neighbors. So you can see for yourself they are surrounded, and there is no way they will survive this, attack from 6, 7, 8 sides. Now the whole world has started to arrest them, and these guys have to die in the pits in the hole where they are hiding in the bunkers. They hold their meetings and everything else. And how thin they are spreading, and when you spread, whether you have an ocean, then it is old sand in the desert absorbs that, and there is nothing left. This is exactly what's going to happen, this to illegitimate state, a Zionist state, and all this cruelty they have let loose on the poor Palestinian children. They cut their head and they are proud. They burn them alive and they are proud. They burn their women, they are proud. They go into their homes and take their private belongings, their panties, their nighties, and they dance with that. They laugh with them. And they say, how many heads of the Palestinian babies in Gaza you cut? One guy says 13. The other says, no, I cut 80s. I just hang them from the hair. I don't look at them while they're crying. And I have 1 month old, and I have killed at least 80, cut their throat, decapitated. So why do you want to leave these animals on this earth? If you want to live in peace, wherever in the world you live, you have to get rid of this and eliminate them if you want to have peace in this world. यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर